गुड आफ्टरनून ऑल मु श्रिया स्वागत जनाऊँ आम चैनल द क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया को। आई होप कि आपण समस्ते बहुत बढ़िया से थे वो निजर एग्जाम पाई बहुत भलसे प्रिपरेशन भी करुवे। तो सांग मैंने लास्ट क्लास रे आम मैंने डिस्कशन करते एडोलेसेंस और प्री एडोलेसेंस विषय। ए क्लास रे आम मैंने डिस्कशन करबा इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट। ओके, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट रो डेवलपमेंट उपरे कौन प्रभाव पड़ुछि से संपर्क में आज आम मैंने डिस्कशन करबा। तो फर्स्ट आम मैंने देखने कॉन्सेप्ट एंड इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी माने कौन, तार कॉन्सेप्ट कौन रही एवं तार इफेक्ट किभली भाव में पड़ी थाए गोटे शिशु उपरे। हेरिडिटी इज रिफर्स टू द जेनेटिक इनफॉरमेशन और ट्रेड्स दैट इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स मानक ठारू किछि गुण, तांकर रंग, तांकर बुद्धि ए सबु किछि तांकर पिला मानक पाखको ट्रांसफर हेइ थाए। ओके, तो एटा ही आमे कहूचे जे तू देखिबा को तो बाबांग भली। तो एटा होची कोन ना हेरिडिटी। जदि जने बुद्धिया हैला तांकर छुआ माने भी बुद्धिया हेबे बोलिका आमे माने कहि परिबा। हेरिडिटी इज द मीन्स बाय व्हिच द ऑफस्प्रिंग एक्वायर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट। ओके, जेतेबेले शिशुटी तार पिता मातांक ठा किछि गुण आनी थाए, रंग आनी थाए किंबा बुद्धि आनी थाए, तो गोटे शिशु ठारे तार पेरेंट मानक ठारू किछि कैरेक्टरिस्टिक्स जेतेबेले नजर आसी थाए ताहाको आमे माने हेरिडिटी बोलिका कहि थाउ। पासिंग ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स। ओके, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स किछि कैरेक्टरिस्टिक्स जहा कि जीनगत बा जीन अनुसार ट्रांसफर हेकी आसी थाए सेटा को आमे माने हेरिडिटी बोलिका कहिबा। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी। एई हेरिडिटी रो इन्फ्लुएंस कौन रही? इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट उपरे कौन इन्फ्लुएंस रही? कार्ल पियर्सन कहिसंती is of the view that the height of the child is influenced by the height of his parents. गोटे पिला जदि डेंगा होची किंबा गेड़ा होची ताहा सेटा तार पेरेंट मानक द्वारा तथा जीन गत बोलिका आमे कहि परिबा। एटा किए कहले? कार्ल पियर्सन कहले बोथ हाइट एंड वेट अफेक्टेड बाय हेरिडिटी। ओके, हेरिडिटी अनुसार जदि किछि पिता माता डेंगा किबा गेड़ा अछंती तांकर पिला माने मध्य सेही भली हेबे, मोटा किंबा पतला थिले तांकर पिला माने मध्य सेही भली हेबे। इन्फ्लुएंस ऑन कैरेक्टर। डगडेल states that children of characterless parents are generally characterless. He proved that statement by conducting joke family study. ओके, डगडेल कहले जदि केही पेरेंट्स भलो अछंती किंबा मंद अछंती तांकर पिला माने सेही अनुसार भलो किंबा मंद होइथांती। इन्फ्लुएंस ऑन इनेट पावर्स। थॉर्नडाइक is of the opinion that innate powers of the child are determined by heredity. तार जो innate power रही गोटे शिशु मध्य सेटा ता पाखो केमिति आसी थाए ना हेरिडिटी रु आसी थाए। इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेलिजेंस। जदि कहार पितामाता बहुत बढ़िया इंटेलिजेंट अटंती, बहुत बढ़िया पढ़ंती किंबा बुद्धिया अटंती, गोडार्ड को मतरे तांको पिला माने मध्य सेही भली हेतांती। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेटनेस। गाल्टन कहिसंती that greatness is caused due to heredity. Studies of the life histories of eminent scientists, artists, doctors, politicians and lawyers shows that many members of these families attained reputation and eminence in the same field. Body structure हमें जदि कहिबा color of eye and skin ताहा मध्य heredity रु ही आसी थाए। ओके, concept and effect of environment. Environment can be defined as a sum total of all the living and non-living elements and their effects that influence human life. मनुष्य जीवन को प्रभावित करुथिबा प्रत्येक लिविंग एवं नॉन लिविंग एलिमेंट सबु किछि परिवेश रे ही रही थाए। While all living or biotic elements are animals, plants, forest, fishery, birds, non-living beings are abiotic elements that is water, land, sunlight, rocks and air. ए सबु किछि भी मध्य इफेक्ट पकई थाए गोटे मनुष्यर जीवन रे। इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट रो कोन रहिछि इन्फ्लुएंस? प्रीनाटल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट। प्रीनाटल एनवायरनमेंट माने शिशुटे जेतेबेले गर्भर थाए सेतेबेले ता उपरे कोन प्रभाव पड़ी थाए? कंडीशंस गेन इन द मदर रूम, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द पेरेंट्स। जदि माटीए सुस्थ रही तेबे तार शिशु मध्य सुस्थ रहिबो। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन। जेते मात्रा रे गोटे माँ न्यूट्रिशन ग्रहण करुथिबो सेही मात्रा रे छुआ को मध्य न्यूट्रिशन मिलिबो। डैमेज और इंसिडेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेडिकल केयर, इन्फेक्शियस डिजीज। जदि माँ को किछि इन्फेक्शन हैला ताहले सेटा छुआ को मध्य हबो। ताहले पोस्टनाटल एनवायरनमेंट कोन? जोटा कि हैला एक्सटर्नल एनवायरनमेंट।
कंडीशंस आफ्टर हिज बर्थ शिशुटी जन्म नेबा परे जो एनवायरनमेंट सहित से खाप खुआई कि चलिबो सेटा हला कोन ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सेथिरे ताको न्यूट्रिशन दरकार चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस दरकार सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस सहित से बढ़िबा दरकार कल्चर एंड ट्रेडिशन ता ऊपर प्रभाव पकई थाए एडुकेशन एंड सोशल लाइफ तार भल रहिबा दरकार जहाँ फल कि से बुद्धिवंत हबो एवं सोशल लाइफ तार भल रहइबो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सहित से बंचिबा दरकार इमोशनल फैक्टर मध्यम पोस्ट लैटरल एनवायरनमेंट रे जाय थाए देन रही नेचर वर्सेस नर्चर नेचर इज द नेचुरल हेरिडिटी जीन्स दैट आर प्रेजेंट इन ए पर्सन व्हाइल बर्थ ओके नर्चर डिफाइन्स द एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स ऑफ ए पर्सन दैट शेप एंड मोल्ड आर एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी नेचर होची जोटा कि नेचुरली हेरिडिटी तथा जीन गत अटे जोटा कि जन्म समय रे गोटे शिशुटारे थाए नर्चर डिफाइन्स द एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स ऑफ ए पर्सन दैट शेप एंड मोल्ड एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी तो एही भाव में आम क्लास 2 को वर्तमान पढ़ी नेले देन आमे माने देखिबा नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस एडोलेसेंस विषय आमे माने लास्ट क्लास रे मध्य पढ़ीचे एडोलेसेंस को तीन भाग रे डिवाइड करा जायछि प्री एडोलेसेंस 11 रु 13 वर्ष मिडिल एडोलेसेंस 14 रु 15 वर्ष लेट एडोलेसेंस 16 रु 18 वर्ष ओके तो वर्तमान आमे माने देखिबा नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस नीड कोन रहिछि एडोलेसेंस मानकर नीड्स फॉर सिक्योरिटी द एडोलेसेंट्स नीड इमोशनल सोशल इकोनॉमिक एंड फिजिकल सिक्योरिटी नीड फॉर लव basic psychological affection or love is one of the most needs of the adolescents okay adolescents have a strong desire to love and to be loved need for approval there is a craving for recognition in adolescents ego gets satisfaction when he is recognized and approved okay adolescence is a time when the individual is striving to win himself away from the control of parents and elders need for self-expression and achievement. Every adolescent has an inherent desire for the expression of his potentialities. Emotional needs semanकर दरकार. Adolescence is a highly emotional period and adolescents are constantly seeking validation and approval from the people around them. तो ए सब नीड दरकार रही एडोलेसेंस टारे आउ मध्य कौन तांकर दरकार फिजिकल नीड मध्य दरकार किछि सोशल नीड इंडिपेंडेंस सेमानकु दरकार सेल्फ एस्टीम प्रोटेक्शन नीड दरकार द नीड फॉर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन दरकार सेक्सुअल नीड दरकार ठीक अच्छे तो फिजिकल नीड होची कोटा ना एडोलेसेंस इज ए पीरियड वेयर एडोलेसेंट्स आर कंस्टेंटली गोइंग थ्रू सेवरल चेंजेस इन देयर बॉडीज ओके दीज चेंजेस मे लीव देम feeling confused and it gives rise to various physical needs. Social needs. Adolescence is a period of identity crisis and adolescents are constantly trying to build their own individuality in society. Independence सेमानको दरकार सेमाने constantly need करिथांती independence को तथा स्वाधीनता तांको दरकार they do not like to be controlled or supervised by elders. Okay. Self-esteem protection need. Children need to experience success and appreciative feedback from their significant others to satisfy their need for self-protection. Okay, the need for meaningful participation. They need to participate in activities and experiences that allow them to reflect on and shape their personal values, beliefs and goals. Sexual need madhya samanकर दरकार the dramatic physical changes in the internal and external appearance of sexual organs of adolescents can be very worrying to some teenager, especially to those who are shy and who don't like to ask questions. तो ए सब needs रही adolescents मानकर problems of adolescence तेबे adolescents मानकर कौन problem रही problem of fulfillment of needs and aspirations. Need of adolescents increase rapidly during adolescence. In case of non-fulfillment of needs and aspirations, they develop inferiority complex which make their behavior negative. तो adolescence समय रे जदि गोटे शिशुटीर जहाँ need एवं aspiration रही जदि से सब fulfill न हैला they develop inferiority complex which makes their behavior negative. Problem of biological. The sex instinct rises very rapidly during adolescence. It creates a strange storm in the body and mind of adolescents. Problem of control and freedom.
adolescents want to live freely during this stage. तांको जमा बांधिकी रखी हबनी कि सेमाने बांधिकी रहिबाको चाहि नथांती. They want to be emancipated from any type of control of the family हो, school हो, society हो, केही भी तांको बांधिकी रखि परिबे नाही तथा सेमाने गोटे जागारे रहिबाको चाहि नथांती. सेटा से समय. प्रोब्लेम ऑफ एडजस्टमेंट से कोठी एडजस्ट करबा लागि टिके समय नै थांती. प्रोब्लेम ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड स्टेटस. द सेंटिमेंट ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट इज वेरी इंटेंस इन एडोलेसेंट्स. दे आर आल्सो वेरी कोटियस अबाउट देयर स्टेटस इन ग्रुप. ओके, जदि ग्रुप हे कि केते जण पाठ पढुछंती 4-5 जण सांग सेमानक मध्यरे जदि जण को भलो कहिदेले ताहाले आउ 4 जण मन दुख करिवे. तो से सबो को गोटे खाप खुआई कि नहीं कि आगो को जुबा को पड़िबो जेहेतु से माने से स्टेज रे अछंती. आमे जेहेतु बड़ तो से अनुसार तांकर माइंड को मैप करबा को पड़िबो. प्रॉब्लम ऑफ एंजाइटी फॉर फ्यूचर. एज एडोलेसेंट्स ग्रो दे बिकम मोर एंड मोर एंग्जियस अबाउट देयर फ्यूचर. ओके. प्रॉब्लम ऑफ मोरल डेवलपमेंट. Adolescents are attracted to religion, philosophy, ideals and values. And on the other hand, they are attracted to bad habits of smoking, tobacco, chewing and sexual desire also. Okay. तो adolescents माने both positive और negative आड़ को attract ही थांती. Perplexity with regard to somatic variation. Every adolescent has more or less difficult task of adjusting to somatic variation which may occur in connection with puberty, childhood and adulthood conflict. In society, the adolescent is considered as neither as a child nor as adult. He has to depend his parents and elders for his physical and emotional needs. But at the same time, he wants to hold independent views and opinions like an adult. Okay. Emotional problem. Fear criticism, fear of failure, anger throwing things, kicking, aggression and antisocial behavior भी adolescence तार देखा देता है. Self destructive. जदि कौनसी कथार से माने रागी जाई पारंती बेले बेले एटा मध्य नजर आसीची जे से माने नेगेटिव भी किछि कर देई पारंती. डिक्रीज्ड सेल्फ एस्टीम. जदि सेमानको कौनसी कथारे तू किछि करि पारुनु खराबटा बेकारटा एमति जदि आमे माने कहिबा ताहाले तांकर सेल्फ एस्टीम कोड माने डाउन हे जिवो. नेक्स्ट आमे माने एठी किछि डेवलपमेंटल टास्क ड्यूरिंग एडोलेसेंस देखिबा. अचीविंग न्यू एंड मोर मैच्योर रिलेशंस विथ एजमेट्स ऑफ बोथ सेक्सेस. अचीविंग ए masculine or feminine social role, accepting one's physique and using the body effectively, achieving emotional independence of parents and other adults, preparing for marriage and family life, preparing for an economic career, acquiring a set of values and an ethical system as a guide to behavior, developing an ideology, desiring and achieving socially responsible behavior. तो ये सब डेवलपमेंटल टास्क रही ड्यूरिंग एडोलेसेंस. ओके. तो यही भाव में बर्तमान आमे माने एडोलेसेंस टाइम रे आसुथिबा प्रॉब्लम एवं नीड को पढ़ी नेले. आई होप कि निहाती भाव में ए सब आपण माने बुझी परिबे. तो बर्तमान क्लास टी को एठी रखुची. थैंक यू.